What a beautiful day and what a beautiful weather. It's a very good morning to all of you. तो कैसे हैं आप लोग? I hope all of you are doing great. And today is 19th December, so Saturday. I've taken a leave because I was not feeling like going to my job. And you know what? We have some things to discuss. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the move like. So I've been going through my YouTube studio and recently, on total I have uploaded 10 videos. But what is actually more interesting is the fact that most of my videos have been viewed by people who have not subscribed yet. So you know what? Please subscribe to my channel because that will help you know what I'm doing, what I'm uploading. That will help me understand that you are interested, that you're coming for content, what I'm producing, that my content is actually interesting you. If you're not liking my content, you can tell me in the comment section of any video. I will actually react to it, I will respond to it, and if it's interesting enough, if it's actually logical, applicable, feasible, I'll definitely do it. ऐसा नहीं है कि मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा उसके बाद आपको जो तो गाली पक के छोड़ दूंगा ना, ऐसा होता नहीं है. ओके, इफ़ इट्स feasible, if it's logical, and if it's gonna help me, then definitely why not. Everybody is a beginner. I'm a beginner, at least I can't speak for everybody else, but I'm a beginner, and I'm trying to learn as much as I can. Obviously a little help will serve a long way. And hit the notification bell, and if you subscribe to my channel, definitely you will know that my video has been released, and that will help me. Video, do hit the like button, that will help a lot, because जितना likes होता है, I think YouTube का logic में algorithm में जितना like होता है उतना वो video what is that most referred video बनता है. जितना शेयर होगा उतना अच्छा. आप लोग शेयर करते नहीं हो, ये चीज़ मैंने देखा है. शेयर किया करो यार, अपने दोस्त की मदद कर दो थोड़ा सा. You know, I do have a 9 to 5 job and I don't really get much of a time after that also. So इसी बीच में किसी तरह टाइम निकाल के मैं कुछ 2-3 ब्लॉग्स बनाता हूँ जो बेसिकली रिलेटेड टू माई बाइक होता है, या फिर ट्रिप्स होता है, टूर्स होता है. आई एम नॉट अ डेली ब्लॉगर, ऐसा अभी तक तो कोई प्लान है ही नहीं. आई एम मोस्टली फोकस्ड ऑन माई बाइक, माई ट्रिप्स, टेस्ट राइड्स इफ एनी, रिव्यूज़ इफ एनी, एंड दैट्स इट. ओह या, एंड मॉडिफिकेशंस. उससे याद आया, आज कुछ करने वाले थे. बोलूँ क्या? देख ही लो. क्या कहते हो? देख ही लो. ऐसे बोल देने से क्या होगा ना, फिर तो मज़ा नहीं आएगा, है ना. दिखाई देता हूँ. या अगेन. क्यों? थोड़ी देर में पता चल जाएगा. प्रॉब्लम क्या है ना कि ये पार्ट जो है इंडिकेट, प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरा जो इंडिकेटर है, जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर लेफ़्ट साइड वाले, उसमें घुस गया है पानी. बाइक मैंने दिया था वॉश में और उसके बाद उसमें घुस गया पानी. आई वॉज वेरी हैप्पी विद दोज इंडिकेटर्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर नॉट दैट ब्राइट. सो एक डाउन पॉइंट वो था. दूसरा बात यह है कि उसमें पानी घुस गया. आई मीन ऑटोमोबाइल के पार्ट्स और पानी घुस जाए, it doesn't gel up together.
इस ब्रांड का मैंने पहले भी इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है. ओके, दीज आर क्वाइट sturdy products, quite nice. They have survived before, but उसमें से भी एक फ्यूज़ हो गया था. These are Ramanta, I think Ramanta ब्रांड का, Ramanta कोई सेलर होगा उसका है. But these are pretty bright, ऐसा आप देख सकते हैं. These are 6 LED bright amber color turn signal indicators that are very bright, and they're very powerful, yet less power consumption is recorded. And मैं यहाँ पे एक छोटा सा गैप देख रहा हूँ. I don't know if you can see this gap or not, but if you can see this gap, और मैं सोचा हूँ कि इंडिकेटर्स मैं खुद लगाऊंगा. तो दिस वाज अ पैक ऑफ 2 एंड मैंने 2 पैक ऑर्डर किया था. आई डोंट नो व्हाई, कुछ अजीब सा ही आया है, और ये पहली बार हुआ है मेरे साथ. 2 आए हैं दैट हैव प्लास्टिक बोल्ट्स. ओके, प्लास्टिक बोल्ट्स. ये 2 आए हैं, दे हैव मेटल बोल्ट्स, इफ यू कैन सी इनसाइड. मैं निकाल के दिखाता हूँ. Which I don't understand why the difference. Okay, this from the same seller, same day delivery. This is metal. Okay, metal. So these 2 metal bolt wale, they came in a single pack. Okay, these 2 came in a single pack. I have ordered from Amazon pack of 4. उसमें लिखा हुआ था pack of 4, but 2 मेटल के 2 प्लास्टिक के क्यों दिया मुझे समझ में नहीं आया. पहले तो मैं सोच रहा था I should just return it, but then I thought कि यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, फिर से ख़राब होने वाला है, फिर से तुम रिप्लेस करोगे. इससे अच्छा लगा ही लेते हैं, जितना दिन चलता है चलता है. वैसे फिट एंड फिनिश तो सही है, बट पानी कितना रोक पाएगा, दैट्स व्हाट आई वांट टू सी. I'm just checking, I'm moving my finger on the glass कि ये टिकेगा कि नहीं. So चलते हैं लगाने. उससे पहले दिखाता हूँ आपको मेरा पुराना जो था इंडिकेटर, उसका हालत क्या है. तो ये मैंने इग्निशन ऑन किया, राइट साइड का इंडिकेटर दिया. इट्स रनिंग गुड. Now let's check the left hand side. See that? Not working. तो ये वाला इंडिकेटर को चेंज करने के लिए I will make this 4 mm panel and remove this one side panel, और इसके बाद I'll be able to remove the indicator and rewire it. So let's see. So this indicator is totally damaged. That's 1 down, 3 more to go. So finally I fit the indicator, and this wire will be connected, and I'll show you the connectance later. Using this to connect these wires with the indicator. I'll show you how.
So I've trimmed down the terminals properly, and I'm gonna join them in this single terminal over here. Let's tighten them up. There. Now these are ready to be connected to a return signal. Just insert the wires inside. That's it. You don't have to twist and turn them every time. Just need to insert. So what I'm going to do is I'm going to flatten up this terminal. As you can see, there. And now it's time to join. So the black goes into the black terminal, and the red goes to the other terminal, like that. So hold it in position and lock it down. Same with the red terminal. Hold it in position, tighten up and lock it down. Now let's see a trial of it. And voila, we have a working indicator. So, second indicator. Now I have to connect the terminals on this side, and this is connected. This is also connected. Now all I need to do is tidy it up. So what I'm going to do is I'm going to pass it through this area. The whole bunch is going to be clasped like this. And there, it's done. So, fourth indicator done, third indicator done, second indicator done, first indicator done. Time for some test. Left side testing. Right side testing. And now hazard testing. Pulse is good. Let's check the front. Front looks good. So now I'm gonna tidy things up and I'll see you later. So the final result.